Very good morning, student. I am Azim Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajada. Student, today I am taking the exercise number 6.1, question number 4 of the class 9 mathematics NCERT, chapter name lines and angles, question number 4. The demand of question in the given figure, that is the figure for this question. If x plus y will be equal of w plus z, what is the mean of the x, y, w and z? Not a variable. X, y, w, z are the respective angles. Then prove that AOB is a straight line. That means we have to prove A, O and B is a straight line. Okay, student? We have to prove AOB is a straight line. What is the property of the straight line? The angle on the straight line will be equal of 180 degree. For example, let me consider this is any straight line AOB. So angle on O will be equal of 180 degree. That means we have to prove angle O will be equal of 180 degree. Okay, student? To prove AOB is a straight line and given that x plus y will be equal of w plus z. Now, solution or proof of question. Student, here according to the diagram, we will start with the x angle x plus angle y plus z plus w. That means a whole cycle x plus y plus z plus w will be equal of 360 degree by the property of circle. That means a total angle on center of circle will be equal of 360 degree. The angle of semicircle equal to 180. तो इस सेमी सर्कल मतलब ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 180 मिलके कितना हो गया 360. सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल वी कैन से angle x plus angle y plus angle z plus angle w will be equal of 360 degree. We can write x plus y plus z plus w will be equal of 360 degree. Now represent in the form x plus y plus z plus w may be written in the form x plus y plus z plus w, x plus y z plus w. But we know that x plus y will be equal of z plus w. That means x plus y written in the form of w plus z, या तो w plus z को x plus y लिखे. So x plus y is a similar. Now z plus w will be replaced by the x plus w by equation first. क्या बोला मैंने? By equation first. Okay student, मैं यहाँ पे लिख सकता था by given that. Now x plus y that means 2 times x plus y will be equal of 360 degree such that x plus y will be equal of 360 to as a denominator. Then we getting x plus y will be equal of 180 degree. Okay student, x plus y will be equal of 180 degree. But we know that very well, since w plus z also equal to x plus y and x plus y equal to 180, we can return w plus z equal to 180 degree. Equation number 2. Here आपने अभी हाल प्रूव करा x plus y will be equal of 180 degree and z plus w will be equal of 180 degree. This is a property since x plus y and w plus z both are will be equal of 180 degree. It's a property of a straight line such that we can say AOB is a example of a straight line. I hope student you getting the proper solution related to first question. फिर से एक बार देख लीजिए. According to the question number 4,
given that x plus y equal to w plus z. We have to prove A O B is a straight line. Given that, to prove. Now time to solution. X plus y plus z plus w, the sum of all angle will be equal of 360 degree. X plus y, w plus z. W plus z written in the form x plus y such that x plus y will be equal of 2 times x plus y. 2 as a denominator, then we getting the 180 degree. X plus y will be equal of 180 and x plus y also equal to w plus z, so w plus z also equal to 180. Sir, upper case में भी 180 है, lower case में भी 180 है, that means AOB is a straight line. Student, now we taking the another question number 5th of the exercise number 6.1. In the given figure, here a simple figure POQ is a straight line. POQ is a straight line, that means our angle O, total angle O will be equal of 180 degree. Ray OR is any ray perpendicular to the line PQ. OR perpendicular on PQ. OS is another ray. OS is another ray lying between OP and OR, जो कि OP और OR के बीच में है. मुझे ये नहीं बोला है कि यहाँ पर कितना एंगल बना रही है. वी हैव टू प्रूव एंगल ROS. एंगल ROS, दिस एंगल will be equal of QOS, that means total QOS minus POS. देखिए कितना अजीब है, इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं, फिर भी मुझे प्रूव करना है. एंगल POS, दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ हाफ ऑफ माइनस सब्ट्रैक्शन, इस पूरे में से इतना माइनस करना. ओके स्टूडेंट, नाउ हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से देखेंगे. फर्स्टली, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन POQ is a straight line. What is the mean of the straight line? Angle on O will be equal of 180 degree. मतलब ये 90 है, तो इधर बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 90. ओके स्टूडेंट, एंड PQ OR is a perpendicular on PQ, that means OR perpendicular on PQ. Okay student, we have to prove angle ROS will be equal of half of angle QOS minus POS. Okay student, to prove angle ROS will be equal of half of angle this and this. Okay, now simple, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ given that. नाउ टाइम टू प्रूफ. स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत फोकस करना, क्योंकि ये जो मुझे लाना है इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. ध्यान से देखिए, पहले मैं बोल रहा हूँ एंगल QOS. व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ QOS? एंगल QOS, ये पूरा एंगल इसके और इसके सम के इक्वल होगा. यस और नो? एंगल QOS will be equal of sum of angle OSR plus ROQ. We can write total angle, वो भी मुझे कैसे पता चल रहा, मैं इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ. एंगल QOS will be equal of sum of these and these. Equation number first. Okay student, now angle POS. What is the mean of the POS? एंगल POS, तो मैं POS के लिए वो क्या बोल सकता हूँ, इस पूरे में से इतने को माइनस कर दूंगा. यस और नो? एंगल POS will be equal of एंगल POR. एंगल POR माइनस एंगल, देखिए POS निकालना है, माइनस SOR. ओके स्टूडेंट, माइनस एंगल SOR. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. But according to the question, we have to find a subtraction between the QOS and POS. So by
by equation 1 minus 2. Equation 1 minus equation 2, that means LHS, subtract with LHS and RHS. RHS, that means angle OSR plus ROQ, subtract with angle POR minus ASOR. Okay student, ठीक है. एंगल P, एंगल QOS, POS will be equal of OSR plus ROQ minus POR minus minus plus SOR. ओके स्टूडेंट, देखिए मुझे जो लाना है उसमें कितना मिल चुका मुझे मिल चुका है QOS, वी गेटिंग द POS. मुझे ROS चाहिए, ROS एंड ROS. ओके स्टूडेंट, मुझे दो बार यहाँ पर कितना चाहिए, एंगल ROS एंड एंगल ROS. ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन आ चुका है एंगल QOS. Such that angle QOS minus POS will be equal of ROS plus ROS will be equal of 2 times ROS, but we getting the some extra part in the form of POR and QOR. Student, here what is the mean of ROQ? ROQ will be equal of 90 degree. ROQ will be equal of 90 degree. And POR, student, मैंने सबसे पहले बोला था this is a straight line. Straight line, that means our total angle will be equal of 90 degree. तो ये हाफ एंगल 90 है, तो मैं एंगल POR, एंगल POR को भी 90 डिग्री बोल सकता हूँ, यस और नो. दिस एंगल विल बी इक्वल ऑफ 90 डिग्री एंड दिस एंगल आल्सो इक्वल टू 90 डिग्री, सच दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल. फाइनली वी गेटिंग एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल टू 2 times of angle ROS plus angle ROQ, and we replace this angle POR in form of ROQ because both are equal to 90 degree. Now this angle will be cancelled by this angle, so finally we getting the QOS minus POS equal to 2 times ROS, such that we getting angle ROS equal to angle QOS minus POS, and here 2 as a कोफिशिएंट यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये इस पूरे के डिवाइड में जाएगा. ओके स्टूडेंट, मैं एक बार और रिकॉल कर दूं. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दिस स्टेटमेंट वेयर POQ is a straight line, that means angle will be equal of 180 degree. Here OR perpendicular on PQ, that means this angle will be equal of 90 and this angle will be equal of 90. ये जो हमने लिखा है यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं बिकॉज OR परपेंडिकुलर ऑन PQ, दैट मीन्स दोनों साइड बनने वाले एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने पहले QOS की वैल्यू निकाली है, फिर हमने POS की वैल्यू निकाली है. क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है दिस माइनस दिस, सो इक्वेशन 1 minus 2, देन वी गेटिंग द दिस स्टेटमेंट 1 time and 1 time will be equal of 2 times. These angles are equal, so cancel by each other. Simply 2 times of the ROS will be equal of this 2 इसके into में सामने वाले के अपॉन में, then we getting the required solution. Student, now we take the example before the exercise number 6.1, example number 6. In the figure 6.27, AB parallel to CD. What is the mean of the AB? AB parallel to CD, and CD parallel to EF. Both are parallel to each other.
AB parallel to CD and CD parallel to EP. Indirectly, AB also parallel to EF. Okay, student. Given that AB parallel to CD and CD parallel to EF, such that we can say AB also parallel to EF. These parallel to these and these parallel to these. EA perpendicular on A and EA perpendicular on AB. EA perpendicular on AB, that means here angle will be equal of 90 degree. And angle BEF will be equal of 55 degree. This angle will be equal of 55 degree. Then find the value of x, y, z. We have to find the value of x, y, z. Okay, student. Now solution by property of interior angle, we can say the sum of angles between the two parallel lines, इन दोनों लाइन के बीच में इन दोनों एंगल का सम y plus 55 will be equal of 180 degrees, such that y equal to 180 minus 55, that means y equal to 50, that means 130 minus 5 equal to 125 degree. Okay, student, here we getting the value of y will be equal of 125 degree. Okay, student. Now, by the property of a corresponding angle, by property of a corresponding angle, we can say this angle will be equal of this. That means x will be equal of y, but value of y will be equal of 120 degrees, such that x also equal to 125 degree. I hope student you getting the proper solution related to x and y. आपको इतना समझ आ गया, x 120 because y will be equal of 120. देखिए ये दोनों कैसे एंगल है, ये दोनों एक तरफ बनने वाले एंगल है, दैट मीन्स आउटर, या तो दोनों इनर होते तो उसको हम क्या बोलते हैं, corresponding angle. Now here the value of z, ध्यान से देखिए, अगर जो मैं इसको कुछ कंसीडर करूं, लेट वी कंसीडर x, y, z एंड w. ठीक है, by property of linear pair. What is the property of linear pair? The sum of angle w plus x will be equal of 180 degree. W plus 125 equal to 180 degree. So W equal to 1 minus 180 minus 125. 180 minus 125 will be equal of 55 degree. Okay, student. Now what is the mean of W? हमने W क्यों निकाला, ध्यान से देखिए. इन ट्राइंगल ABE, the sum of all angle W plus 90 plus Z will be equal of 180 degree. What is the mean of the W? W will be equal of 55. So plus 145 plus Z equal to 180 degree, such that Z will be equal of 145. 145 that means 35 degree. Okay student, फिर से मैं एक बार हर एक चीज बता देता हूँ. In the example number 6, according to the figure 6.27, this line is parallel to this and this line parallel to this, and
and this angle will be equal of 55 degree, and this is a perpendicular, that means a 90 degree. We have to find the value of x, y and z. सबसे पहले हमने बोला since CD is parallel to EF, since CD is parallel to EF, that means the angle between the two parallel lines, interior angle, by the property of interior angle, the sum of interior angle between the two parallel line will be equal of 180 degrees, such that y plus 55 equal to 180, y will be equal of 125. Okay student, now second point, by the property of corresponding angle. What is the meaning of the corresponding angle? If two lines are parallel to each other and third line intersect, then upper angles या तो दोनों ऊपर हो या तो दोनों नीचे हो, this property are known as the corresponding angle. That means angle x will be equal of angle y, but we know that angle y equal to 125, that means x will be equal of 125 degree. Now मुझे z निकालना. ओके स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा बोला बाय प्रॉपर्टी ऑफ द लीनियर पेयर, ठीक है, w प्लस एक्स विल बी इक्वल ऑफ 180, वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ w निकाल लिया. ये ट्राइंगल देखिए, इन द केस ऑफ द ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल एंगल्स विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री, दैट मींस दिस प्लस दिस प्लस दिस विल बी इक्वल ऑफ 180 डिग्री. सो फाइनली वी गेटिंग द वैल्यू ऑफ z, the value of x, the value of y and the value of z. I hope student you getting the proper solution related to example number 6. Thank you so much for watching this YouTube channel of Santipani Higher Secondary School Rajuda. Student, please like, subscribe and also study from our channel.